Assalamu alaikum, everyone. I hope all of you are doing well. So, we are officially starting this session, which is the orientation to the private university course that has been recently launched by premed.pk on its online platform. So, just for starters, I just want to welcome all of you. We are currently live on YouTube. So, just make sure that you share the YouTube link with all your friends who are applying to universities like AQ, Shifa, Ziauddin, and even all the students who are applying for the MD-CAT in Pakistan this year, because I'll be sharing some tips and tricks. इसके साथ में let's start. We have the comment section open on the YouTube channel. So if any of you have any questions or any concerns, do message over there, and I'll try to read them out as well and answer them alongside the session. Along with me, I have Hamad over here as well, who's sharing his screen, and he will further talk about our dashboard on the website. Hamad, can you please move on? So guys, before I begin, I just want to talk a bit about premed.pk and what we're exactly doing over here. So premed.pk was launched somewhere in 2021, when the idea was that my co-founder Fahad, who I will introduce a bit later on as well, I'll also introduce myself in a bit. We had the idea that a lot of students in Pakistan really struggle when it comes to the MD-CAT and other medical universities admission tests. So we have the MD-CAT, we have AKU, we have Ziauddin, and then we have a lot of other universities that also conduct their own admission tests. And masla ye tha ke the process was very fragmented, where there was not one platform or one institution that was offering all the resources to the students. पहला मसला तो ये था, and दूसरा मसला ये था कि जो admission fees थी, right, for these academies, for these tuition centers, for these even अगर कोई online course था, they were very expensive and students could not afford it, right? तकरीबन 2 लाख बच्चे हर साल पाकिस्तान में MD-CAT देते हैं, but the idea being that they don't have those resources. Not everyone is the child of a very rich landowner, or for example, हर किसी का अपनी अबू doctor भी नहीं होता है, just like me. So the idea was that we wanted to make it a cheap platform, and the reason we could do that was because we were actually targeting all the students in Pakistan. So इस तरह, for example, अगर मैं सिर्फ कराची में एक छोटा सा institution या academy खोलता, I could only target, let's say, 100, 200, 500 kids from that area. But because we've been national to all across Pakistan, we've been able to help more than 120,000 students. So that's around 120,000 students get into their dream medical schools. Hamad has added testimonials at the end of this slide as well. So we'll talk about how students have, sort of liked our platform, how we've been able to help students all across these few years. Iske saath mein, if you guys know, we're not just a question bank. We have an avid resources sort of like, collection right now. So we have a question bank, lectures, notes, guides, chapter shortlisting, cheat sheets. So there's a lot of things on Premed. And all of these have been made keeping our students in mind. So all of you, your suggestions were used, and that's how we built this entire platform. तो जो suggestions आप लोग भेजते हैं हमारी तरफ कि हमें ये, for example, feature चाहिए, हमें ये, for example, एक bug है, इसको सही करना है. So we're constantly looking out for those suggestions, and then we work upon them and deliver it to all of you. So Premed is a platform made by students, medical students, dental students, students in all across different fields, for students who are applying for the MD-CAT and other institutional exams in Pakistan. So moving on, I would like to introduce my co-founder, Fahad. He's currently a fifth-year medical student at Dow. He could not join today because उनके बिल्कुल last year के prof चल रहे हैं, and inshallah in the next 10-15 days he will have the title of doctor next to his name because he'll have graduated. Fahad handles the tech side of things at Premed, and इसके साथ में also looks after the marketing, where the mission is कि हम Premed.pk हर एक student को पहुंचा सकें, where the idea is that any student in Pakistan who is giving the MD-CAT, they should not say कि हमें Premed का पता नहीं था, because I personally feel, and we've also run some stats, we've seen कि जो बच्चा, for example, Premed पे over 20,000 questions करता है, they have a sure shot of getting 180 plus on their exam. So this is a challenge to all of you. Go ahead, do 20,000 questions on Premed and do them well. Don't just read them, understand them, learn the explanations. And if you don't get 180 plus, it's a money back guarantee from my end, right? I'll pay you guys personally agar aap log ka 180 plus nahi aata, but you have to put in the effort.
Moving on to my introduction as well. So I'm actually a fifth year medical student at AKU, but my graduation is somewhere in November, inshallah. And agar mera ek bada famous quote hai, which I've also put on my WhatsApp status that I want everyone to know about. And the idea is from Steve Jobs, who actually says that we're actually here to make a dent in the universe. Varna hum yahan aaye hi kyun hai? And I genuinely feel that as a doctor, as a student, as for example, someone who's preparing for the MD CAT, our mission, our vision should be not just कि यार मुझे बस med school में घुसना है. The vision, the mission should be कि हमें actually एक impact बनाना है, right, in this entire world, right? You can get into the best of medical schools, you can go to the best of, for example, academies and get in as well. But अगर आपका छोटा सा goal है कि यार मुझे for example सिर्फ 1000 patients को सही करना है and treat करना है, I'll be happy with that. That is not enough. You have to have a vision कि यार मैं पूरे पाकिस्तान के लिए काम कर सकूं. And for me, my visions, my role models are people like Abdul Sattar Eidi, for example, Dr. Adib Rizvi, SIUT में जो होते हैं, Indus Hospital में, literally there are people who are working at an insane amount and helping so many people in the world. Recently, the Chancellor of the Aga Khan University, His Highness Prince Karim Aga Khan, passed away. A lot of you might have seen him. I'm so impressed by his work. I did not know it, by the way. When he passed away, I was going through YouTube, I was going through all the posts, and literally I was so impressed by the work he's done, not just in Pakistan, but even in Africa, in the UK. And it just shows that, this person was not just living for his own self. He was a billionaire, but he was working towards helping all people across the world. And that is where all of you should be aiming for as well. कि यार जिस तरह Indus खड़ा हुआ है, जिस तरह शौकत खानम बना हुआ है, जिस तरह all these institutions are there in Pakistan that are operating. Literally, अगर मैं किसी को भी बोलता हूँ कि एम्बुलेंस का नंबर बताओ, they will not say cheaper, they will not say 11-20, they will just say 115 because they know ED का वो number है. And that is the power that Abdul Sattar Eidi made in Pakistan. And all of you should have the same mission as well. When you guys are becoming doctors, when you're planning on becoming the healthcare force of Pakistan, that Pakistan could give back karna hai. And that is what the country needs the most as well. Can you please move on? Right. So now, why is this orientation session happening? That's the first question. So, hum is pe baat zara karte hain. So the idea is that a lot of students, they apply for the MD CAT in Pakistan. 2 lakh bachche karte hain. But AQ बहुत कम बच्चे apply करते हैं, around 6,000, 7,000. That has been increasing. We've been trying our level best to tell students. But मैं हर student को बताता हूँ कि as an AQ student, what I really, really want is that everyone should know of how great an institution AQ Ziauddin is. A lot of kids don't apply. Why? Because they feel, oh my God, हम afford नहीं कर पाएंगे. Oh, we can't afford it. मैं सबको ये समझाना चाहता हूँ. We've made countless videos on it कि यार AQ has a very strong, a very robust system of giving scholarships and loans and aids to students. We have people who are studying on 100% scholarship. तो अगर आपको डाउ को भी 50-60 हजार देने पड़ रहे हैं, there are 5 kids in AQ who are studying on a completely 100% scholarship. मतलब वो 1 रुपया भी नहीं दे रहे हैं. So for them, the AQ fees and tuition is actually cheaper than going to DAO as well, or going to Allama Iqbal, or going to Kimu. तो इतना भी होता है. So the first thing that I want to emphasize to everyone is that AQ is a great institution, right? आप लोगों ने अपने पिछले 12-15 साल लगाए हैं in preparing for the MD CAT, like हर एक क्लास में आपने टॉप मारा होगा. But this is the most important time, when MD CAT. देखो अब आपने A levels में जो किया है, FSC में जो किया है, मैट्रिक में जो किया है, O levels में जो किया है, it all matters. Obviously, आपकी equivalency बनती है. But अगर आप MD CAT में mess up करते हो, अगर आप AQ exam के लिए sign up ही नहीं करते हो, तो यार you are ridding yourself of 5 years of a beautiful opportunity that a lot of students don't get in Pakistan. So the idea being, I would really suggest all of you that आप लोग अभी भी AQ के admission portal खुला हुआ है, खुलने वाला है, go apply, right? Make sure, yeah, it's a थोड़ी सी फीस है. They also give, I think aids पे भी देते हैं. Try applying to AQ, apply to Ziauddin. Because the idea being, मैं आपको honestly बताऊंगा, मुझे ज़्यादा AQ का मंजन नहीं बेचना. I've not been hired by AQ. This entire thing is not sponsored by AQ at all. We have no affiliation with AQ. But as a student, I'm very proud that I spent the last 5 years over there, because generally I see a difference in a student who's trained by the Aga Khan University and a student who's trained by any other institution in Pakistan. Honestly, it depends on the students as well. There are some slackers in AQ as well who don't do shit, who just waste their time in the hostel. But there are also some people who really put their effort in, who do the research, who go to societies, who join and go for electives. And is tarah, they make a beautiful future out of themselves, right? There are people in Pakistan who've been trained
by AQ who are doing great. For example, there are people all across the globe. There are people in America, in the UK, in Australia, who are the program directors, who are the head of institutions in America. And the reason being because unko wo AQ se itni, like, you know, sponge ki tarah sab kuch grasp kiya, and now they're giving back to society all across the world. So पहले बात तो ये है कि if you've not applied to AQ, make sure to apply. Try your luck. They have a robust scholarship system. And trust me, अगर आप AQ के लिए अच्छी तैयारी करते हो, then आपकी तैयारी for the MD-CAT is also done. सही है? So that way, you are ready for even MD-CAT in the best of ways. तो आपका कोई नुकसान नहीं है, actually फायदा होता है. A lot of people have not given an exam before the MD-CAT जो इस तरह का MCQ वाला basic exam होता है, जिसमें negative marking भी हो सकती है, जिसमें for example maths and SR भी होता है. So it's the best preparation also for the MD-CAT. You know, time crunch में किस तरह perform करना है. This is something not everyone has the skills to. So the more you practice, the more you learn via pre-med, the more you learn via the AQ exam, you will be getting a beautiful opportunity out of that, right? So हमारे course की features, now one is this course launching, if you guys don't know. So private university का course is launching from today. Today is the orientation session जिसमें आप सब लोग अभी शामिल हैं, right? इसके बाद मैंने चाहा कि everyone who is in applying to AQ or giving the MD-CAT, they should know about this orientation session. So I opened this for everyone on YouTube. इसके साथ में हमारी जो classes है, they start by the 17th. So Monday से इंशाल्लाह classes start होंगी. I'll talk about the course का section, the features, everything a bit आगे. But this course is primarily for students who are applying for all the private universities in Pakistan. This includes AQ, Ziauddin, Shifa, CMH, right? इनका admission process थोड़ा सा different होता है. There's a stage 2 form, there are interviews, there are different exams apart from the MD-CAT. So I know students really struggle. You know, students कहते हैं कि हमें maths and SR नहीं पढ़ने आता है, हमें general knowledge नहीं आती. So the idea is with this course, we'll be covering all of that and much more. ताकि जो students हैं, उनकी MD-CAT की तैयारी तो हो ही हो, और साथ में they also sort of prepare for the AQ, for the Ziauddin, for the Shifa exams in the best possible way. अच्छा, so now talking about this course features. So सबसे पहली बात तो ये है कि we are going to be having live lectures, right? Who is going to give these live lectures? That is the first question. कौन पढ़ाएगा? Now there are academies out there. I'm not going to take names. You guys know about those academies. आप लोगों ने शायद join भी कर लिया हो under parental pressure. But the point being कि those academies से कि हम आपको MD-CAT plus AQ की तैयारी करवाएंगे, हम आपको MD-CAT plus Ziauddin की तैयारी करवाएंगे, हम आपको MD-CAT plus NUNS की तैयारी करवाएंगे. And I put out all those claims as false, as baseless, because मैंने खुद academy join की हुई है, and I have seen that there is literally no academy that teaches for AQ in the way that we teach. Alhamdulillah for the last 2 years जो हमने AQ के courses करवा रहे हैं, because the idea being कि मैंने system realize किया है कि academies have those teachers जो MD-CAT की तैयारी करवाते हैं और शायद अच्छी तैयारी करवाते होंगे, but AQ का exam बहुत अलग है. You will realize when you go and give the exam कि what Hasnain bhai was saying on the 15th of February, one day after Valentine's Day, कि why is the AQ exam so different? It has negative marking. It has maths and scientific reasoning. It has even the biochem physics के जो सवाल है, they're not your हलवा पप्पू सवाल जो आपके MD-CAT में आते बुक की लाइनें, आपको सोचना पड़ता है. I speak from experience because I gave the AQ exam twice. So I gave the exam literally 2 दफा. So I saw each year कि किस तरह के सवाल आते हैं. And I've been mentoring students who have gotten into AQ. More than 50 students जिनको मैंने mentor किया है, उनके interview लिया है, उनको help की, उनका literally हाथ पकड़ के admission करवाया. Alhamdulillah, alhamdulillah. So I always ask them, you know, paper किस तरह का आता है. They give me their feedback. Hasnain bhai इस तरह के सवाल आ रहे हैं. We don't share any past papers, but what we do tell people is that, you know, यार आपको biochem physics की तैयारी इस तरह करनी है कि दिमाग चलाने वाली तैयारी करनी है. और just कि यार book की लाइनें याद कर ली and now I'm ready for AQ. You will not be ready for AQ at all. So हमने जो courses के teachers रखे हैं, they are teachers who have passed the AQ test themselves. You know, so उनको best पता है कि यार how does the AQ exam work. We have a couple of teachers जिन्हें 2-3 दफा दिया exam. तो best part तो ये कि वो आपको बताएंगे यार 2021 में इस तरह आया था, 22 में इस तरह आया था, 23 में इस तरह आया था, 24 में इस तरह आया था. तो you will know each year what sort of paper comes and how you can attempt it in the best possible way. तो पहली बात तो ये. दूसरी बात ये है कि a lot of academies what they do is they talk about high yield. We do not go for high yield. We teach you everything. मैंने एक experience as a teacher, as a mentor, as an expert on the MD-CAT realize किया कि यार पाकिस्तान में ना syllabus वाली चीज is sort of bullshit. सीधी बात है, right? हर साल आप देखोगे MD-CAT रिकंडक्ट होता है, प्रेस क्लब के बाहर कराची सदर में लोग बच्चे बैठे होते हैं, एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए. क्यों भाई? वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ गए. भाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, नहीं लो हमारा कोर्स.
एक खुदा के वास्ते चीज जरूर करना भाई, आउट ऑफ सिलेबस चैप्टर्स भी पढ़ लेना फॉर AQ फॉर MD कैट। अभी से बता रहा हूँ, क्वेश्चंस विल कम, नेशनल MD कैट होने वाला है, बट ट्रस्ट मी एक सवाल आएगा जो शायद सिंध की किताब में ना हो, पंजाब की किताब में हो, पंजाब की किताब में ना हो, सिंध की किताब में हो। यार प्लीज गो अहेड एंड जस्ट डू ऑल द प्रोविंसेस वेल इनफ, राइट? अगर आपने अपनी लेट्स से सिंध की किताब पढ़ ली है एंड अब ताकत नहीं है फेडरल पंजाब की बुक पढ़ने की, go ahead on pre-med, just do all the questions for God's sake, just go ahead and do questions, ताकि आपको पता हो कि पंजाब की बुक में ये लिखा हुआ है जो आपने शायद सिंध में ना कवर किया हो। जो बच्चा बोलता है वो ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, हम ये नहीं पढ़ेंगे, उनका एडमिशन नहीं होने वाला है। वो प्रेस क्लब के बाहर बैठा हुआ होगा सदर में, गर्मी में रो रहा होगा उसके अम्मी अबू के साथ, एंड एडमिशन नहीं होने वाला है। आई हैव सीन दिस एवरी ईयर ऑन ईयर, kids have to take a gap year, they go to dental, they go to random degrees because MBBS में नहीं होता है। तो प्लीज फॉर गॉड सेक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस कर लेना। अभी कल एक बच्चे का मैसेज आया था, मैंने कहा भाई तुम अपना सिलेबस छोड़ दो बट आउट ऑफ सिलेबस कर लो, बिकॉज मुझे पता है सिलेबस तुमने कवर कर लिया होगा ड्यूरिंग योर FSC एंड A levels, आउट ऑफ सिलेबस की वजह से तुम मार खा जाओगे। And if you want to be like those students who want to sit outside Sadar and press club and cry about their exam, तो अलग बात है। But if you want to be a smart kid who says कि यार सिलेबस को छोड़ो, मुझे सब कुछ कर लेना है, मुझे फ्यूचर बहुत प्यारा है, मुझे डाउ में घुसना है, मुझे अल्लामा इकबाल जाना है, मुझे कीमो जाना है, मुझे खैबर जाना है, मुझे कायदा आजम मेडिकल कॉलेज जाना है, तो जस्ट मेक श्योर कि आप सारा सिलेबस कवर कर रहे हो एंड इवन आउटसाइड द सिलेबस कवर कर रहे हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई कैन अश्योर यू थ्रू दिस कोर्स हम वही कर रहे होंगे। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये, बच्चे बोलते हैं सर एकेडमी क्यों अच्छी है, बिकॉज हम टीचर से सवाल पूछ सकते हैं। भाई सिमिलरली वी विल हैव रिकॉर्डिंग्स, सही है ना, हमारे जो सारे लेक्चर्स होंगे उनकी रिकॉर्डिंग्स तो बनेगी, साथ में आप क्लास के दौरान सवाल पूछ सकते हो, जिस तरह मैंने अभी बोला है कि आपको मैं लाइव के सारे सवाल दिए जवाब दूंगा, आई एम नोटिंग ऑल द क्वेश्चंस। और इसके साथ में एट द सेम टाइम वी विल हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप जहां पे टीचर विल बी अवेलेबल 24/7। भाई एकेडमी आपको ऑप्शन देती है कि स्टाफ रूम का 24/7 नहीं देती है, हम देते हैं कि आप रात की इवन 2 बजे मैसेज करो, हम मेडिकल स्टूडेंट्स ही हैं, बैठ के जाग ही रहोगे, कुछ पढ़ ही रहे होंगे, आपको सीधा वॉइस नोट जवाब दे देंगे। दिस इज द पावर ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटी कोर्स कि आपको 24/7 मेंटोरशिप, संडे हो या मंडे हो, रात का 2 बज रहे हो या 4 बज रहे हो, वी विल रिस्पॉन्ड टू यू बिकॉज वी हैव टीचर्स, वी हैव मेंटोर्स who have been through the same process, they know what you guys are going through and they want to fix this. सबसे मजे की बात यह है कि भाई हर लेक्चर के बाद आपको नोट्स मिलेंगे, उसी जो आपको एनोटेशन टीचर ने, अब आप एकेडमी जाते हो आधे वक्त क्या कर रहे हो, तो टीचर लिख रहे हैं जल्दी लिखो जल्दी, अरे भाई वी आर डूइंग, टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे हैं, जो टीचर एनोटेट करेगा, जो वो बोर्ड पे लिखेगा, जो वो पढ़ाएगा, वो सब एक जगह कंपाइल होगा, आपके पास डैशबोर्ड पे सेव हो जाएगा। तो यू डोंट हैव टू ओ सर का मिस हो गया, बच्चे से किताब ले रहे हैं, उसने क्या लिखा था, भाई सब कुछ आपके पास एक जगह कंपाइल्ड होगा, यू विल जस्ट गो अहेड एंड डू इट, सिंपल एज दैट, मेक लाइफ इजी। वर्कशीट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो लिटरली क्या होगा कि एवरी टाइम देयर इज अ लेक्चर, देयर इज गोना बी सम होमवर्क दैट इज असाइन्ड टू द स्टूडेंट। अब स्टूडेंट का भी तो काम है, थोड़ा काम करे ना, हम ही बैठ के सब कुछ करवा दे। अब हम बच्चे को बोल देंगे भाई आपको ये होमवर्क मिल गया, आपको जाके होमवर्क करना है, ठीक है। अब वो बच्चा करे ना करे वो उसकी मर्जी है। वी विल ऑब्वियसली सेंड रिमाइंडर्स, वी विल ऑब्वियसली शेयर ऑल द relevant stuff again and again and again. We will also do follow-ups. We will also give you a dashboard जहाँ पे आप अपना आपको कंपेयर कर सकते हो कि भाई मैं लीडर बोर्ड पे 1 हूँ एंड लेट्स से हमाद नंबर 2 है एंड XYZ पर्सन नंबर 3 है, ठीक है। तो अब आई हैव टू स्टे एट द टॉप, तो आई एम गोना मेक श्योर कि मैं सारे सवाल ऑन टाइम कर रहा हूँ, मैं सही तरीके से कर रहा हूँ एंड मेरी तैयारी परफेक्ट हो रही है। उस कंपटीशन के चक्कर में ही ना आपका एडमिशन हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, एक जब एक होता है ना एक क्लोज हिट, एक क्लोज कम्युनिटी कि यार सारे बच्चे एक क्यों की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे जलन आती है ना कि यार वो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। दैट विल मेक श्योर दैट आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। दिस इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच इज अनमैच्ड। एमडी कैट के लिए जाओगे, 100 बच्चे बैठे होंगे क्लासरूम में, कोई बातचीत नहीं हो पाएगी, कोई वो पता नहीं चलेगा वो बच्चा क्या कर रहा है। अब यहाँ पे तो लीडर बोर्ड सामने सामने नजर आ रहा है, हसनैन ननकानी टॉप पे बैठा हुआ है, हमाद बोलेगा हसनैन भाई को तो मुझे हटाना है, 1 मुझे बनना है, आई हैव टू बिकम द टॉप पर्सन, एंड दैट इज हाउ यू गाइस विल प्रिपेयर इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अकेडमीज बोलेंगी हाँ AQ की तैयारी करवाते हैं, वी आर द बेस्ट फॉर AQ, हमने एडमिशन करवाया है, बट मैथ्स और साइंस रीजनिंग को पढ़ाएंगे ही नहीं। वी हैव एक्सपर्ट टीचर्स जो मैथ्स और साइंस रीजनिंग, जो सबसे बच्चों का खौफनाक सेक्शन होता है ना ऑन द एंटायर एग्जाम, हम वो भी कवर कर लेंगे ताकि किड्स आर प्रिपेयरिंग इन द बेस्ट पॉसिबल वे फॉर दैट एज वेल, ठीक है। अच्छा, सो इसके साथ में अगेन मैंने क्या बोला कि अगर आप हमारा कोर्स लेते हो तो आप ना सिर्फ अपनी MD कैट की तैयारी करोगे, बट बिकॉज वही कोर्स इज एप्लीकेबल फॉर FSC, फॉर A levels, तो वो सब भी कवर हो जाएगा। तो दिस वे आपको एक सॉर्ट ऑफ एक मेंटर, एक स्टडी बडी ग्रुप मिल रहा है जहां पे आपकी पूरी A level, FSC, MD कैट, AQ, ज़ियाउद्दीन हर चीज की तैयारी हो रही है।
and that is one good reason that I think everyone should buy our course. कि यार it's an all-in-one thing, you know, not just AQ but MDCAT सब कुछ cover हो जा रहा है, which is beautiful, which is what I think is the most good thing about this course कि सब चीजों की तैयारी एक साथ हो रही है. टेस्टिंग रेजिमेंट में आपको मैंने बताया कि भाई हम लोग इसके आगे मैं बताऊंगा अभी. टेस्ट टेस्ट टेस्ट, हम टेस्ट लेते रहेंगे, बच्चों को क्वेश्चंस देते रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस इतने देंगे कि आप बोलोगे भाई प्लीज बंद कर दो, बट यू विल कीप डूइंग दोस क्वेश्चंस. क्यों? बिकॉज उससे आपकी तैयारी होगी. यू विल गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम इनटू AQ का एग्जाम, ताकि व्हेन यू गो इन द एग्जाम इट शुड जस्ट बी लाइक होमवर्क. आप बोलो यार ये तो मैंने कल किया, ये तो मैंने परसों किया था, ये तो सवाल इतना हलवा है. This is what I want every kid to say when they come outside the AQ exam center कि यार हमारा पेपर was just like pre-med का एक homework. Literally ये होना चाहिए. ठीक है. So, मैंने बात कर दी about monthly test as well. Affordability मैंने बताया. I know academies, I know tuition centers who are charging a lot of money. We are the most affordable platform out there. सही है ना. एक और मजे की बात आगे आने वाली है for people who can't even afford. So stay tuned. You guys will all enjoy it. Just in a few slides. सही है ना. And guidance from an insider. इस तरह बोला कि मैं कोई insider हूँ. But yes, insider यूँ हूँ कि बार मैंने जिस तरह बताया, I've mentored over 50 plus students who've gotten into AQ. हर साल सिर्फ 100 का तो admission होता है, right? अभी मैं example देता हूँ. हाल ही में I was standing in the court, जो हमारे area है in AQ. When people come and share, you guys will find out. वो एक स्टूडेंट केम टू मी, शी वाज अ गर्ल, शी सेड आप हसनैन मंकानी है. मैंने कहा जी, आई एम हसनैन मंकानी. क्या हुआ? आई यूज्ड प्रीमेड. मैंने कहा ओह, वेयर आर यू फ्रॉम? कहती है आई एम फ्रॉम स्वाति, उसने कहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो मैंने कहा ये तो मुझे पता भी नहीं कि सिटी है कौन से सूबे में, मुझे कुछ नहीं पता. एंड इसी तरह ऐसा 3-4 बच्चे आ गए, नॉट 3-4, आई विश आई हैड द पिक्चर, हम बाद ऐड नहीं की होगी, बट आई विल सेंड द पिक्चर ऑन द ग्रुप्स एज वेल. कि लिटरली ऑल दीस किड्स केम अप एंड दे सेड ओह, आई एम फ्रॉम दिस सिटी, आई एम फ्रॉम दिस सिटी. आई वाज लाइक डिड यू यूज प्रीमेड, डिड यू यूज प्रीमेड? एंड लिटरली अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन हैज यूज्ड प्रीमेड. इट वाज सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर मी. आई वाज सो हैप्पी अबाउट इट. सो जेन्युइनली मैं सबको ये कहता हूँ कि यार आप AQ आओगे, आपने अगर नहीं यूज किया होगा तो यू विल बी लाइक ओह शिट, आई वाज द ओनली वन. यू विल बी द लकी स्टार, द ब्लैक शीप हु यूज्ड did not use pre-med and got it. बाकी 99 ने यूज किया होगा, एंड आपने एक्स्ट्रा मेहनत की होगी जो बाकी ने नहीं की होगी. तो आपका बड़ा आसान काम है, get the course, get pre-med and just make sure कि आपका AQ में एडमिशन हो जाता है. Let's move on. So अब तो बात करते हैं कोर्स आउटलाइन. सो दिस कोर्स इज गोना लास्ट लिटरली वन डे बिफोर द AQ एग्जाम पे आपके साथ हम लोग बैठे हुए होंगे. इट्स नॉट गोना एंड इन मार्च, इट्स नॉट गोना एंड इन अप्रैल. लिटरली एग्जाम से एक दिन पहले मैं ही आ रहा हूँ, मैं ही सेशन करवा रहा हूँ बच्चों का कि आओ भाई बच्चों कल एग्जाम है, इस तरह तैयारी करनी है, इस तरह दिन गुजरेगा, इसके बाद क्या करना है, इस तरह पार्टी करनी है, सब कुछ आपको बताऊंगा मैं. सो वी स्टार्ट फ्रॉम द 15th. आज ओरिएंटेशन सेशन है. 17 को वी स्टार्ट द एंटायर कोर्स. एंड मैं थोड़ा सा तोड़ के बताता हूँ कि इस तरह फॉर एग्जांपल 15 फरवरी से लेके 2 मंथ्स के लिए, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल हम लोग सिलेबस कवर करेंगे. ठीक है. फिर 15 अप्रैल से 11 जून तक हम एग्जाम सपोर्ट देंगे. एंड देन जून से लेके एक्चुअल जो AQ का टेस्ट डेट होता है जब तक आपको हम टेस्ट करवा रहे होंगे. ठीक है. समाद, कैन यू प्लीज शो द नेक्स्ट स्क्रीन. सो अगर हम बात करें फ्रॉम फरवरी टू अप्रैल हम कर क्या रहे हैं. सो दिस इज वेयर वी विल टीच यू ऑल द कंटेंट. सो यू विल हैव बैक टू बैक क्लासेस, नॉट बैक टू बैक एसेंशियली, बट क्लासेस एवरी सिंगल डे ऑफ द वीक. ठीक है ना. सो वी गोना हैव अराउंड 8 क्लासेस पर वीक. आई नो स्टूडेंट्स हैव देयर ट्यूशंस, दे हैव देयर अकेडमीज, सब लोग जाते हैं सुबह में. सो हम लोग ये करते हैं कि हम लोग यूजुअली क्लासेस रात में करवाते हैं. Right? When kids are free from everything, around 8 to 10 का टाइम होता है, उसके दौरान हम बताते हैं. And every day we ask the students, अगर let's say for example 5th फरवरी आ गई, छुट्टी आ गई और समथिंग हैपेंस, तो हम बच्चों को बोल देते हैं यार कि आज क्लास आप लोग बताओ क्या बेस्ट टाइम के लिए रखें. तो बच्चे जो मेजॉरिटी बताते हैं कि हमारे लिए let's say 7 PM बेस्ट है, 8 PM बेस्ट है, हम जब भी क्लास रखते हैं. So there will be no class का clashing with any academy, with any tuition culture, कुछ भी नहीं होगा. We will keep it at a time when everyone can attend. Sundays will be off. बट संडेज को हम लोग ये करते हैं कि वी हैव एन ऑप्शनल गाइडेंस सेशन. हमने एक प्लान ये बनाया कि स्टूडेंट्स हु आर इन AQ, डिफरेंट स्टूडेंट्स इन AQ, दे विल कम एंड टॉक अबाउट कि देयर एक्सपीरियंस विद द AQ एग्जाम, देयर एक्सपीरियंस विद एंकी, देयर एक्सपीरियंस विद रैंडम स्टफ, राइट. जो भी उनके पूरे प्रिपरेशन तरीके में जो उनको हुआ था कि यार कि दिस वाज समथिंग दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, हम उसको कवर करते हैं, राइट. सो दिस इज हाउ वी विल कंडक्ट क्लासेस ऑन मंडे टू सैटरडे. And Sunday will be a guidance session by AQ students on bilkul their topics that they feel that students should know about. Equivalency, about negative marking, about for example maths and SR का section. So इस तरह हमारे science के lectures होंगे, इसमें biology, chemistry, physics से, and then again maths and SR के भी section अलग से होंगे. So इस तरह हम लोग lectures throughout these 8 weeks from 17th of April
टू द 15th of April हम लोग कंडक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग जब ए लेवल का फॉर एग्जांपल लेट्स से हमने इस तरह रखा है जानबूझ के, इस तक ना आपके मॉक्स नहीं होंगे, जैसे अप्रैल में आपके मॉक्स शुरू होते हैं तो क्लासेस विल सॉर्ट स्टॉप, आई टॉक अबाउट हम उस दौरान क्या करेंगे। एंड इस तरह हम लोग हर क्लास के बाद मैंने बताया आपको होमवर्क देंगे, वीकली मंथली असाइनमेंट्स होंगे आपके पास, यू विल बी डूइंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। तो आपकी तैयारी इन द सेंस ऑफ नोट्स, इन द सेंस ऑफ लेक्चर्स, इन द सेंस ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट होगी, सही है। नाउ मूविंग ऑन फ्रॉम अप्रैल, व्हाट विल वी डिस्कस, समात कैन यू प्लीज मूव ऑन। सही है। सो नाउ अब अप्रैल से जून में क्या होगा, सो नाउ इसके बाद हम लोग ये करेंगे कि नाउ यू गाइस विल बी हैविंग योर मॉक्स, राइट, सो यू विल बी हैविंग योर मॉक एग्जाम्स बिफोर योर एक्चुअल एग्जाम्स, या तो ए लेवल की या एफएससी के। तो इसके दौरान हम क्या करेंगे, हम लोग बच्चों को बोलेंगे अच्छा व्हाट इज द बेस्ट टाइम, we will have those doubt clearing sessions, तो kids will send us all their questions कि हसनैन भाई, हमाद भाई, रुमाइल भाई, हमारे ये सवाल है, हमें ये समझ नहीं आया, so we will be holding doubt clearing sessions every day, ठीक है ना, बेस्ड ऑन योर डिमांड। तो इस तरह हमारे टीचर्स अवेलेबल होंगे, बट जब भी आप लोग को लगता है कि यार हमारी छुट्टी आ गई, लेट्स से कुछ 5th of February आ गई, लेट्स से कोई छुट्टी आ गई, 1st में आई थिंक छुट्टी होती है, हम बोलेंगे चलो भाई लेबर डे आ गया, हम लोग फॉर एग्जांपल सेशन दे देते हैं। इस तरह बच्चों को हम लोग जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर आउट करवा देंगे, सही है। इसके साथ में क्या होगा, इसके साथ में आपको रिवीजन लेक्चर्स होंगे, ऑब्वियसली जो हमने नोट्स पढ़ाए हैं, जो क्लासेस करवाए उनके रिवीजन होंगे, ऑब्वियसली बच्चे भूल जाते हैं। तो जो सबसे हाई, अभी आपको बताता हूँ, फिजिक्स का लेंसेज ऑप्टिक्स हाई चैप्टर है, एसिड्स बेसिस एल्कली का सवाल अगर नहीं आया मेरा नाम बदल देना। तो इस तरह के सवाल, कैविटेशन इन फिजिक्स पक्का पक्का आएगा आपके पास, बायोलॉजी में किंगडम एनिमलिया प्लांटे पक्का पक्का आएगा। तो ये सब सवाल जो है ना, जो सारे टॉपिक्स आपको हम रिवीजन करवाएंगे कि यार ये हाई यील्ड चैप्टर है, ये हाई यील्ड नोड है, ये हाई यील्ड फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट है, वो सब हम रिवीजन के तौर पे करवाएंगे। सो दिस वे आपको रिफ्रेशन मिलता रहेगा। तो जो भूल गए हो वापस याद करवा देंगे, जो नहीं कवर किया है वो भी याद करवा देंगे, जो डाउट्स है वो भी क्लियर करवा देंगे। सो दिस वे योर प्रिपरेशन फॉर AQ विल बी परफेक्ट, फॉर जियाउद्दीन विल बी परफेक्ट, फॉर शिफा CMH विल बी परफेक्ट, ठीक है। अगेन गाइडेंस सेशंस तो चलते रहेंगे। सो इसमें अगेन जिस तरह मैंने बताया आपको नेगेटिव मार्किंग, आपको फॉर एग्जांपल किस तरह पेपर अटेम्प्ट करना है, किस तरह आपको टाइम करना है, किस तरह आपको फॉर एग्जांपल क्या शेडिंग करनी है, क्या शुरू से शेडिंग शुरू कर दो, एंड में शेडिंग करनी है, एंड की फ्लैश कार्ड किस तरह इस्तेमाल करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस किस तरह करने हैं, सैट 2 की बुक्स किस तरह करनी है, मैथ्स, ऐसा इतने टॉपिक्स हैं दैट यू ऑल आर नॉट इवन नोइंग, जो हम आपको कवर करके देंगे। सो दिस वे योर प्रिपरेशन विल बी परफेक्ट। एंड अगेन असाइनमेंट्स तो मिलते रहेंगे, आपका जीना हराम कर देगा हमारा, इतने असाइनमेंट्स भेजेगा, बट ट्रस्ट मी दीस असाइनमेंट्स आर द रीजन व्हाई किड्स हैव गॉटन इन द लास्ट few years, and this is the reason why we will make sure all of you who are attending this session, who are joining our course, will also make sure to get in, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। सो नाउ आगे हमारे पास जो क्रंच टाइम है, लास्ट महीना बिफोर द AQ एग्जाम, क्या करेंगे। सो इसमें हमने इंश्योर कर दिया होगा कि ऑल ऑफ योर notes, all of your lectures, all of your content will be covered. So this is the time where we will be testing you out, right? इसमें हम topical test देंगे, जो आपको हमने सारे टेस्ट करवाएंगे, उसके हम topical test देंगे आपको, quarterly test देंगे, half syllabus, full syllabus, mock test. तो even आपको हम बोलेंगे आओ, today is the day, it's the doomsday exam, सही है ना। लेट्स अगर एग्जाम 17 जुलाई को हो रहा है, so like 10th of जुलाई को एक दिन होगा जहाँ पे सारे बच्चे एक मीटिंग ज्वाइन करेंगे, सबको हम बोलेंगे आओ 9 AM को सेशन क्लास स्टार्ट होगी, सही है ना। उसमें आपको जिस तरह 1.5 घंटा 2 घंटा एग्जाम के लिए मिलता है, आपको वही टाइम मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी उस एग्जाम के अंदर, वही प्रेशर क्रंच होगा, वही आपको फॉर एग्जांपल मुश्किल सवाल होंगे, एक दो सवाल हम जहाँ मुझे गलत भी डालेंगे ताकि बच्चे फॉर एग्जांपल बोले ओह माय गॉड ये सवाल कहाँ से आ गया, जो असल एग्जाम में भी होता है। एंड जो पूरा एग्जाम का होता है सिनेरियो, वो आप एम्यूलेट करेंगे। इसकी वजह से होगा क्या सीन, के एक्चुअल एग्जाम पे आप बोलोगे यार दिस इज जस्ट लाइक 10th of July, I just gave the exam exact same paper, the exact same scenario on the 10th of July, and I am ready for this exam. This is just like a homework assignment from pre-med. This is what we will do. So this is how the last महीना will shape out, and जो भी सवाल, जो भी mock test, जो भी half monthly test, जो भी half syllabus test हम करवाएंगे, तो इन सब की टीचर्स आके डिस्कशन करेंगे। सो आपका कोई भी सवाल गलत होता है, ऐसा नहीं कि आपको हवा में छोड़ दिया, आपको पता नहीं है। वी विल मेक श्योर टू कवर इट, वी विल मेक श्योर टू डिस्कस इट, दैट वे योर प्रिपरेशन विल बी मेड परफेक्ट, सही है। मूविंग ऑन, तो लेट्स मूव ऑन। तो अब थोड़े से सवालात आए हैं, सो लेट्स डिस्कस दोस। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। लेट मी जस्ट जूम आउट ऑन माय स्क्रीन। सो यस, 1 second।
सही. So a lot of kids have been asking कि भाई scholarship तो अभी for everyone who's asking about the scholarships you have आपने बात पकड़ ली है. तो अभी I'll tell you about the scholarship. Will it be enough for both MDCAT and private university? बिल्कुल Nurul and Rahman. As I mentioned, it is both applying to MDCAT, for AQ, for Ziauddin, for all the exams, even NUMS तक, because हम लोग आपको इतना content पढ़ाएंगे और content तो same रहता है, right? हमारा पढ़ाने का तरीका will be more logical, more difficult. तो आपकी MD क्या की तैयारी तो पक्का पक्का आसानी से हो ही गई होगी when you get done with our private university course. सही है ना? MD CAT का अगर किसी को सिर्फ AQ अप्लाई नहीं करना है, we have a beautiful इब्तिदा MD CAT course with over 200 plus students who are loving it. I wish हमारे testimonials add किए हुए हो. अगर नहीं किए हुए, we are posting them on our social media, on our ads. It's a cheaper course that is only applying to MD CAT. Make sure to go enroll in that. Because trust me, अगर सिर्फ आप MD CAT, मैं तो बोलूंगा बच्चा भाई आप प्लीज AQ का एग्जाम भी दो, नहीं भी अगर जाना AQ जरूर एग्जाम दो, आपको वो प्रेशर सिनारियो मिल जाएगा जो आपकी MD CAT की तैयारी करवा देगा. बट नहीं यार, हम नहीं जाना चाह रहे, हम अपने कराची में रहना चाहते हैं, हम लोग अपने ही गाँव में रहना चाहते हैं, हमें फॉर एग्जाम्पल कि लाहौर में रहना है, हमें कराची ट्रैवल नहीं करना है एज अ हॉस्टलाइट. ओके, आई अंडरस्टैंड, एवरीवन हैज डिफरेंट सिनारियोज, अंडरस्टैंड. MD CAT का कोर्स का नाम है इब्तिदा. इट्स अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट. Make sure to go and purchase it. It is a beautiful course for all the MD CAT students. It has again classes of English, biology, chemistry, physics, even आपका जो logical reasoning है, तो सब कुछ cover हो रहा है. It's much cheaper. उस पर discount भी लगा हुआ है आजकल. Go purchase it. That's only for MD CAT. उसमें AQ की तैयारी बिल्कुल नहीं होगी, अभी से बता रहा हूँ, ठीक है? uh, I was an A-level student. I graduated from KGS in 2019. पहले साल में मेरा admission नहीं हुआ. I went to Tao Medical College, so I got into the best medical college in Pakistan as well. Then I reapplied to AQ, gave the test again, and got in. So Alhamdulillah, I'm in AQ right now. I'm in my 5th year, and my university ends somewhere in November. Please do pray for me. Past papers for AQ, yeah, it's a big question. They don't exist in the market. There are links out there, but we don't share them around because I think past papers repeat नहीं होते हैं, क्योंकि तो फायदा नहीं होता है. जो हमारे mock exams होते हैं, they are questions that are similar to AQ, not exact past papers, right? तो ये make sure करना, because it's not like the MD CAT. MD CAT में तो खुलेआम past papers repeat होते हैं. AQ is very careful about this. Past papers don't repeat. ठीक है? Admission start नहीं हुआ है. You can go on our channel. We have a WhatsApp channel. I hope we can add it to the chat box of YouTube. हमारे अगर आप add कर सकें और हम ना, so वहाँ पे हमारा WhatsApp channel हमारा add हुआ है, description में add हुआ है. वहाँ पे we send all the updates about AQ, about NUMS, about MD CAT. So make sure to join that. Make sure to follow us on YouTube. Make sure to follow us on Instagram. वहाँ पे हम सारी newsroom में share कर रहे होते हैं details. So इस तरह kids are ready with all the latest updates about pre-med and about the MD CAT and AQ exam in Pakistan. ठीक है? How to manage both A levels and this course? That is a beautiful question. So this is why मैंने बताया था कि यार through this course आपकी तैयारी हो रही होगी. तो I'll give an example. ऐसा आपका A2 चल रहा है and you have your mocks coming up. जो हम क्लास पढ़ा रहे होंगे वही आपने A लेवल में पढ़ी होगी. हम बता देंगे, हमारे जो टीचर्स हैं वो A लेवल के बच्चे भी हैं, FSC की भी स्टूडेंट्स हैं, तो आपको बता देंगे यार A लेवल में इस तरह के सवाल आते हैं. अगर आप जाके प्रीमेट के ये 100, 150, 200 सवाल कर लोगे, आपकी A लेवल की तैयारी भी हो गई, आपकी AQ की तैयारी भी हो गई, आपकी MD CAT की तैयारी भी हो गई. जो बच्चा कह रहा है कि मैं A2 के CAI के बाद पढ़ूंगा या मैं FSC के एग्जाम के बाद पढ़ूंगा, you guys are not getting in. अभी से बता रहा हूँ क्लियर कट, बिकॉज इतना कम टाइम बचता है, आप इतने थके हुए होते हो, आप नहीं कर पाते. This is the time to study from Feb all the way to August, September. जब भी MD CAT होता है, these 6 months will be hell. Generally, they will be hell for you. I'm not even kidding. But एक दफा एडमिशन हो गया, when you get that degree, when you get that letter of AQ or DAO or KIMU, you get that thappa, आप अपने Instagram पे लगाते हो, KIMU class of 2030, KIMU class of 2029. It is a beautiful moment, and trust me, वो जो 6 महीने जो ख्वार होते हैं, जो रोना आता है, वो सब आप भूल जाता हो. तो wow, now I'm in KIMU, I'm in AQ, I'm in Allama Iqbal, I'm in DAO. It just is a beautiful moment. जब घर वाले आते हैं, वाह वाह आपका बेटा डॉक्टर बन रहा है, आपकी बेटी डॉक्टर बन रही है, वो 6 माह आप 1 सेकंड में भूल जाते हो. तो यार ये अभी से याद रखो. टुडे इज द 15th of Feb. आज से जान मारनी है for the next 6 months. अपने आप को इंश्योर करवाना है कि you get into a beautiful medical school in Pakistan, because trust me, मैं बहुत सेशंस करता हूँ. I've made lot of videos as well on my Instagram as well, कि जब आप
मेडिसिन में होते हो, जब आपको डॉक्टर बोलता है, जब स्टेट पहनते हो, जब ब्लैक कोट पहनते हो, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, एंड वो फीलिंग कोई लेके जा नहीं सकता। 6 माह जान मारनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, बट आप एक सेकंड में भूल जाते हो व्हेन यू गेट दैट डॉक्टर की डिग्री नेक्स्ट योर नेम, व्हेन यू वेयर दैट स्टेट अराउंड योर नेक कि यार अब तो हम डॉक्टर बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। सो इट इज अ फीलिंग दैट इज कंप्लीटली वर्थ इट टू एवरीवन, राइट। फी स्ट्रक्चर हमने मेंशन किया हुआ है, आई विल टॉक अबाउट इट इन द लेटेस्ट स्लाइड एज वेल, तो क्या है, सही है ना। इसके आगे चलते हैं, स्कॉलरशिप की बहुत ज्यादा बात हो रही है। अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन मेंशनिंग कि यार आई वांट टू जस्ट परस्यू मैथ्स एंड एसआर, तो मैं सबको बताना चाहूंगा कि यार essentially this course was planned for maths and SR, but I talked to a lot of students who are currently in AQ who have used our course and they all suggested कि नहीं हसनैन भाई आपको साइंसेस डालना जरूरी है। I said भाई क्यों भला? तो दे सेड हसनैन भाई रीजन ये है कि यार लिटरली जो साइंसेस का सेक्शन है ना AQ का, वो बहुत डिफरेंट है, बच्चों को समझ नहीं आता। बच्चों को लगता है भाई हमने पढ़ ली अपनी किताबें, हम सेट है। नहीं भाई नहीं सेट हो, आप लोग मार खा जाओगे, मार खा जाओगे, मार खा जाओगे, मैं बता रहा हूँ। आज मैं भी मार खा गया था, मैंने मैथ्स सर बेहतरीन कर लिया था, साइंसेस में रह गया था फर्स्ट टाइम। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपका साइंसेस में जिस तरह AQ टेस्ट करता है उस तरह आप तैयारी कर रहे हो। That's very important. This is why this course is covering all 5 topics. I don't want anyone to come and say कि यार हसनैन भाई हमने मैथ्स ऐसा अच्छा कर लिया और साइंसेस में रह गए। There are different cutoffs for both. आप मैथ ऐसा अच्छा कर लोगे AQ कोर्स के थ्रू, आपका साइंसेस रह जाएगा। आप साइंसेस अच्छा कर लोगे थ्रू सम एकेडमी, आपका मैथ ऐसा रह जाएगा। दिस इज व्हाई वी आर ऑफरिंग ऑल 5 टुगेदर ओवर हियर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। सो एडिशनल ऑफरिंग्स मैंने बताया, गाइडेंस सेशंस है, वर्कशीट्स, होमवर्क्स है, आपको रिकॉर्डिंग सारी मिल जाएंगी अगर आपने लाइव लेक्चर मिस कर दिया, और इसके साथ में आपको सारी एकेडमीज को छोड़ के जो आपके सारे, फॉर एग्जांपल आप ज्वाइन कर रहे हो एकेडमीज, लेक्चर्स ऑनलाइन, सब कुछ छोड़ के हम एक जगह में आपको सब कुछ ऑफर कर रहे हैं। AQ MD कैट नाम्स की तैयारी टू दिस कोर्स। ठीक है, लेट्स मूव ऑन हमाद। So now, a special news for all of you. So we have this as pre-enrollments are out, as अभी हम लोग sign up करवा रहे हैं। आपने देखा student एलिजिबल है हमारे पास 186 हमारा था। We have students on our website 194, 196 महक लोहाना का स्कोर है। Literally people have gotten beautiful scores through pre-med. हमारा जो last toppers आते हैं, सिंध के, पंजाब के, फेडरल के, they're all using pre-med, and it's beautiful to see कि यार ये toppers get into AQ, into KIMU, into Allama Iqbal, into Dow, into Khyber, into all the top medical colleges. So trust me, आप अगर pre-med नहीं use करोगे, जो मैं आपको money back guarantee की बात की है, you will be missing out. Make sure to remember that. अभी हमारे पास अगर आप enrollment करते हो तो मजे की बात ये है कि we are offering 8 mock exams in the exact same format as AKU with negative marking in the sciences section for all of you. तो आप जाके जरूर एनरोल करो एंड गेट एक्सेस टू ऑल ऑफ दोस एग्जाम्स। एक जरा करो, देखो कि कितने पानी में हो, देखो तो सही कितने हालात खराब है। और साथ में वी आर ऑफरिंग 6000 क्वेश्चंस फॉर एब्सोल्युटली फ्री अगर आप अभी जाके एनरोल करते हो। सिवाय अगर आप अभी हमारा एनरोल करते हो, वी आर गिविंग यू जो हमारा AQ का टॉपिकल सेक्शन है कंप्लीटली फ्री। इसमें हमने सारे, फॉर एग्जाम्पल जो टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स आते हैं, बायो, केम, फिजिक्स, even maths and SR divided in the specific topics जो AQ syllabus से बने हुए, in that specific way हम offer कर रहे हैं। So अगर आप अभी enroll करोगे तो आपको बड़ा फायदा होगा। Just make sure to go to our website. We will add it to our social media. We will add it to the description. We will also add it to the chat box. So make sure to go and check it out right now. ठीक है ना? It's called the private university course. Go enroll now for 8 mocks. इसके साथ में 6000 plus questions और साथ में the entire AQ course as well. चलो आगे चलें। भाई एक बच्चे ने बड़ा बोला है कि क्या कहते हैं, हम बड़े परेशान हैं, हम A लेवल के बच्चे हैं। देखो the teachers है ना, they are ones who've gone through exactly the same as you guys. आप लोग जो सिंध वाले बड़े लकी हो। I'm gonna shit actually, I'm gonna shit on the sin books, सही है ना, जो 2021 और 20 में थी। They were so pathetic. I swear to God, काश मेरे पास होती, आपको मैं दिखाता। They were black and white. और मैं मैरी जोन्स से आने वाला A लेवल का बच्चा था, KGS का। मैंने वो किताब खुली, मैंने कहा ओह माय गॉड, आई कांट इवन रीड दिस, आई कांट इवन रीड दिस। मैंने YouTube लेक्चर्स यूज किया, ये क्या वो क्या, मुश्किल से एडमिशन करवाया। सो फॉर ऑल ऑफ यू वी मेड लाइफ सो इजी कि लिटरली आप लोग को अंदाजा नहीं है कि 2020 के जो मैं जमाना था ना, जब लिटरली आप फेसबुक पे जाके पेपर सर्च कर रहे थे, आप क्रम्पल पेपर से आंसर की देख रहे थे, देयर वर नो आंसर कीज, नो एक्सप्लेनेशंस। आपने वो जमाना देखा नहीं है। सो आपके लिए लिटरली ये जमाना जन्नत होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है बहुत मुश्किल है, आस्क द पीपल 10 years ago, 8 years ago, how much they have
cried and worried and how much their parents and their families have cried. तो आप लोग तो बहुत lucky हो. तो for all of you, आपको तो literally एक platter पे सब चीजें मिल रही हैं. So you guys are very lucky. को ऐसे पैसे देने पड़ रहे हैं and you are getting the best of the best resources. So you guys are all very lucky in this day and age. Technology भी इतनी आ गई है, ChatGPT भी आ गया है. You guys are lucky, honestly. एंड हमारा काम यही है कि आपको रेलेवेंट रिसोर्सेज दें, आपको बताएं कि हम किस स्टेज से गुजरे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं मेंटली, इमोशनली, हम सब उसके बारे में बात करेंगे ताकि आप लोग की तैयारी बेस्ट हो सके. ठीक है, लेट्स गो आगे. सो टेस्टिमोनियल्स की बात करते हैं. सो दीज आर पीपल, मरियम एंड अबीहा आर माय जूनियर्स. दे आर क्लास ऑफ 2027 if I'm not wrong at AKU who used our platform, right? Abiha and Mariam are people who I actually took interviews of as well. You know, Abiha to abhi bhi mujhe aake milti hai कि Stand by, how are you? She's still taking guidance from me about AKU as well. So wo matlab it's like a lasting culture. You know, it's not just about getting into AKU. It's also about, you know, मैं 5th year में हूँ तो they always ask कि you know, Aslan bhai, how do we study anatomy? How do we study biochemistry? How do we study pathology? Alhamdulillah मेरे honors भी आ जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है. तो they often ask, you know, obs gynae किस तरह पढ़ना है, Aslan bhai pediatrics किस तरह पढ़ना है, किस तरह ये करना है वो करना है. सो इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग कल्चर. हमारे टीम मेंबर्स को हम रिसर्च भी करवाते हैं, हम उनको फॉर एग्जांपल एडमिशन भी करवाने के बाद भूल नहीं जाते हैं. सो दिस इज जस्ट अ फ्यू टेस्टिमोनियल्स आउट ऑफ द सो मेनी हु गॉट इनटू AKU. मरियम का भी मैसेज आया था कि हसनैन भाई देयर इज अ स्टूडेंट हु वांट्स टू अप्लाई टू AKU, तो हाउ शुड वी गाइड देम. मैंने कहा सिंपल, मेरा नंबर दे दो, आई विल गाइड देम माय सेल्फ. तो लिटरली आई लव गाइडिंग पीपल, आई लव हेल्पिंग पीपल आउट. तो लिटरली ये हालात होते हैं कि मैं ही बैठ के वॉइस नोट भेज रहा हूँ ड्यूरिंग क्लिनिक्स, ड्यूरिंग माय रोटेशंस, ड्यूरिंग माय राउंड्स कि बच्चा इस तरह पढ़ना है ताकि जितने ज्यादा बच्चों की मैं हेल्प कर सकूं into getting into AQ I can. ठीक है. So moving on, so this is just few of the testimonials. Let's move on. So Varisha, Manni, Laiba, all of these are AQ kids. Varisha was the class rep of AQ. So mashallah, super smart kid. आके AQ में class rep भी बन गई. She took advice from me कि किस तरह apply करते हैं for the class rep position. Laiba was our course teacher from last year, if any of you recognize her as well. So amazing work. Hamat, a lot of people are messaging on the chat box. Can you please also reply over there? If possible, ताकि बच्चे वहाँ भी उनके हम जवाब दे सके via text message as well अगर मैं मिस कर रहा हूँ. So Laiba was a teacher as well for the crash course. She herself used AQ का crash course. Then she became a teacher as well, and kids loved her teaching style as well. So Laiba, Varisha are people who I see around on campus as well. Let's move on. So now over to Hamad. Hamad is our course manager who will be in contact with you as well. जो आपको थोड़ा सा डंडा मार होगा, भाई ये क्वेश्चन करना है, ये करना है, वो करना है. So Hamad is going to be that person. So I wanted Hamad to take the floor and just talk about the dashboard for AQ का जो हमारा private university का पूरा course है. So over to you, Hamad. All right. Hello everyone. Assalamu alaikum. I hope I'm audible and I hope you all are doing good. So first of all, it is really important कि हमारे पास जो भी resources हम provide करें, they all are gathered at one single place ताकि आपको कोई भी चीज़ हो तो आप easily access कर सकें. Whether it is lecture recordings, हमारे lecture notes, any worksheets, PDFs, हर lecture के बाद as we are going to provide you with lecture tests, तो वो सब चीज़ एक proper जगह पे organized रहना is really important. So that's where Premed came up with this dashboard, which is a really cool dashboard जहाँ पे आपको हर चीज़ एक जगह पे accessible होती है. So just to access the dashboard, हमारे पास एक navigation bar में dashboard का option होता है, and on the left hand side you can select my lectures. तो as आपने सब लोग जिन्होंने enroll किया है उनके पास dashboard यहाँ पे show हो रहा होगा. We have different tabs for dashboard जहाँ पे आपको stats हो गए normal, and easy access to assignments or announcements or your teachers. यहाँ पे आपके notes हो गए, हर जगह पे easy access होता है. If you want to contact support, आप यहाँ से contact करेंगे and you can easily reach out to me or any other representative. In course content we have different tabs. आपके पास जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे easily. They are going to be weekly test, mocks, जो भी होंगे यहाँ पे ऐड होते जाएंगे. Then we have separate folders for bio, chemistry, physics, maths and science reasoning, ताकि आपको अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो it's really like एक वो confusion हो जाती है if you are following any old method like drives or anything कि आपको एक chemistry का specific lecture देखना kinetics, तो वो आप कैसे एक्सेस करेंगे. एंड व्हेन इट वाज इट अपलोडेड, आपको याद है 27th वाला लेक्चर मैंने मिस कर दिया था, अब मैंने वो देखना है बट यू डोंट नो एग्जैक्टली किस डेट पे वो अपलोड कौन सा टॉपिक कवर हुआ था. तो यू कैन जस्ट ओपन द कोर्स डैशबोर्ड, आप अपनी डेट देखें एंड उस दिन वाला जो लेक्चर है वो आपने देख लिया. उसके अलावा वी विल हैव अदर थिंग्स जैसे कि हमारे पास ओरिएंटेशन विच इज टुडे, एंड
any other guidance sessions जो हमारे weekly basis पे guidance sessions होंगे, they all will be added here. So अगर आपको कभी एक AU का टेस्ट पैटर्न है, आपको वो समझ नहीं आ रहा, उसके ऊपर स्पेसिफिक गाइडेंस सेशन होगा that you can easily like go through it again. They all will be happening live, पर उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको सब प्रोवाइड की जाएंगी. या फिर यू वांट टू नो कि बायोलॉजी के टिप्स हमें चाहिए, बायोलॉजी में हमें एक जगह प्रॉब्लम हो रही है, या लेट्स से फिजिक्स न्यूमेरिकल्स में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती है, तो इन टाइप के जो भी हमारे पास हॉट टॉपिक्स होते हैं उन सब पे गाइडेंस सेशंस होंगे. बट द थिंग इज कि आपको अगर एक गाइडेंस सेशन मिस कर लिया तो उनकी रिकॉर्डिंग्स हो गई, या फिर कोई रिसोर्सेज जो उसमें शेयर की गई थी वो आपको कैसे मिले. तो यू कैन जस्ट गो टू अवर डैशबोर्ड, गो इन द अदर सेक्शन, एंड जो भी हमारे पास गाइडेंस सेशंस हुए होंगे वो सब आपको यहाँ पे इजीली होंगे. एंड वी आर आल्सो गोइंग टू ऐड द अपकमिंग वंस हियर एज वेल. वो भी आपके पास 1-2 दिन में यहाँ पे अनाउंस हो जाएंगे, एंड यू कैन सी के कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे अब हमारे पास सेशंस होने वाले हैं नेक्स्ट. सो इफ यू रिलेट टू इट, यू कैन जस्ट बी रेडी फॉर इट एंड ज्वाइन दैट. यू कैन ऑल्सो मैसेज मी और एनीवन एल्स कि आपको किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे सेशन करवाना है, तो दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड बाय अस. अदर देन दैट, all the assignments, PDF resources या जो भी चीजें आपको हम प्रोवाइड करेंगे, they will be available here. All the announcements will be here, and analytics के अंदर आप अपना लीडर बोर्ड देख सकते हैं. So when you guys will be attempting tests and all, तो आप देख सकेंगे कि हम कहाँ हैं exactly, कौन सी प्लेस पे आते हैं. So let me just show you guys the इब्तिदा कोर्स का डैशबोर्ड quite quickly. तो ये आप देख सकते हैं. So you can know कि exactly आपकी एवरेज करेक्ट परसेंटेज क्या आ रही है, आप कौन सी पोजीशन में है, और then we have a leader board, तो आप किस रैंक पे स्टैंड आउट करते हैं फ्रॉम ऑल दी अदर स्टूडेंट्स, या फिर हमारे पास टॉप परफॉर्मर्स में आप आते हैं या नहीं आते. सो यू जस्ट, ताकि आपको एक वो मोटिवेशन मिलती रहे. एंड एग्जैक्टली आपने एवरेज कितने नोट्स रिव्यू किए हैं, लेक्चर्स कितने मिस हो गए, सो यू कैन सी ऑल ऑफ दी स्टैट्स एट सिंगल प्लेस. अनाउंसमेंट्स होंगे, यू गाइस आर गोइंग टू हैव वीकली शेड्यूल्स गेट. तो एवरी संडे आपको ना कमिंग वीक का वीकली शेड्यूल मिल जाता है लाइक दिस. तो आपको पता होता है एग्जैक्टली कि कौन सी क्लास किस टाइम पे है, क्या टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ताकि आप पहले से ही उसकी तैयारी कर सके. तो दिस इज इब्तिदा एमडीकैट्स वीकली शेड्यूल. सैटरडे को हमारे पास आज वीकली टेस्ट हुआ था, कल इनका मंथली टेस्ट होगा, एंड ऑल द टाइमिंग्स दे ऑल वर इन्फॉर्म्ड बिफोर, ताकि उनको पता हो कि एग्जैक्टली कौन सी क्लास कब है, एंड दे आर लाइक नो मैसेज. When we are going into course content, जब आपकी recordings upload हो जाएंगी, when the live classes start, you all will have 3 components: lectures, homework questions, and notes. So for every single lecture, you all will be given homework questions, ताकि जो पढ़ाया जा रहा है उसकी आप properly practice कर सकें. You guys can check the notes as well. Notes इसलिए ताकि quick revision हो जाए. अभी lecture हो गया, आपने रात को या सुबह उठ के जल्दी से notes के go through कर लिया, ताकि easily आपका सारे concepts वापस revise हो गए. So इस टाइप के आप लोगों को भी notes provide की जाएंगी. You can see के कौन से पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, कौन से टीचर ने पॉइंट्स गो थ्रू करवाए थे. सो यू कैन इजीली सी, एंड यू कैन सी कि कितना अच्छा इंटरफेस है. सो इट्स लाइक वेरी इजीली एक्सेसिबल. उसके अलावा अनाउंसमेंट्स, देन एनालिटिक्स, एंड अगर आपको कोई नोट्स चाहिए, सो ऑल ऑफ देम आर अपलोडेड हियर. तो आपको कोई भी लेक्चर चाहिए, आपको डायरेक्ट सिर्फ नोट्स चाहिए, तो लेक्चर नहीं देखना होता, कभी सिर्फ नोट्स रिव्यू करने होते हैं, तो आप इजीली उनको यहाँ भी देख सकते हैं. एंड this is that course dashboard that we have. इसका आप लोगों को एक्सेस मिल गया होगा on your website. I'm going to repeat कि आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं. So this is our website. You are going to go towards the press the navigation bar में से आपने dashboard को press किया. Left hand side पे anti-test courses होंगे, and you're going to go to my lectures. यहाँ पे आपको आपका courses का dashboard मिल जाएगा. So that was the courses dashboard, and we will continue with the other things. Snail bhai, you are muted. Kids are asking for our number, तो मैंने शेयर कर दिया इन द चैट. और व्हाट्सएप का भी जो नंबर है, आप इसी पे मुझे रीच आउट कर सकते हो. प्लीज डोंट कॉल फॉर गॉड सेक, जस्ट व्हाट्सएप मी, वरना मैं हिस्ट्री ले रहा हूँ, वहाँ पे कॉल लगने लग जाएंगे आप लोगों की. तो यू कैन जस्ट मैसेज ऑन दिस नंबर. एंड इसके साथ में एट द सेम टाइम हमारा विल आल्सो शेयर इन द चैट बॉक्स ऑल ऑफ आवर व्हाट्सएप लिंक्स एंड ऑल. तो आप लोग हमारा जो एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं और न्यूज़ बताते हैं स्टूडेंट्स को, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. नम्स पे यस. सो हम बेसिकली, देखो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, हम आपको कंटेंट इस तरह पढ़ाएंगे कि आपका एमडी कैट नम्स एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी और इसका ऑब्वियसली जिस तरह हम क्लासेस देंगे ऑल, वी विल टेल यू एग्जैक्टली कि भाई किस तरह फॉर एग्जांपल एक्यू की क्वेश्चंस आते हैं. बट द आइडिया बीइंग कि एक्यू का एग्जाम इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन. सो इफ यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट इन द बेस्ट पॉसिबल वे, तो आपकी नम्स और एमडी कैट की तैयारी हो गई है. ठीक है. गाइज प्लीज, हम लोग आपका नंबर चैट बॉक्स में डाल रहे हैं, सो जस्ट डू दैट. या फिर हमें आप लोग फॉर एग्जांपल इसी जो हमारा वेबिनार चल रहा है इसी के ऊपर फॉर एग्जांपल आप कमेंट भी कर देना, या फिर हमारे सोशल मीडिया या तो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे हमें मैसेज करो, तो आपको हम नंबर शेयर कर देंगे. ठीक है. कैन यू प्लीज मूव ऑन. यस.
So अब मजे की बात for everyone, and now everyone, now there is around more than 100 people watching us on YouTube. So the idea being this is what the banger is. This is the big news for everyone. A lot of kids have been reaching out to me कि भाई हसनैन भाई हम लोग AQ का जो private university course है वो afford नहीं कर पा रहे, right? It's not in our hands. We cannot afford it. We cannot, for example, sustain the amount. तो हमने specially keeping all of you in mind ये बनाया है, सही है ना? It's a scholarship program for all of you students who cannot afford but really want to get into AQ, जिनके ड्रीम्स और ख्वाब होते हैं, पेरेंट्स के ड्रीम है कि हमें AQ में बच्चे को एडमिशन करवाना है, AQ की लाल दीवार में जाना है, हॉस्टल में रहना है, आगा खान यूनिवर्सिटी का थप्पा चाहिए. So for all of you, this is the best news you guys can hear today. It's a special gift from me and Fahad, the co-founders of Premed, to all of our students, right? तो ये है हमारा scholarship program, सही है ना? The idea being that I'm going to talk about it, how it works. So अभी हमारे कोर्स पे एक डिस्काउंट लगा हुआ है, राइट? तो मैंने बोला यार ना, लाइक यू नो, स्कॉलरशिप तो हमें बच्चों को देनी है ताकि स्टूडेंट्स कैन इजीली अफोर्ड इट. तो ऑफ कोर्स एकेडमिक तरीके से हम लोग देंगे आपको, रैंडमली इस तरह नहीं देंगे. सो द आइडिया इज कि जो बच्चे ने मेहनत की है, हु हैव वर्कड हार्ड इन द लास्ट फॉर एग्जांपल 10-12 इयर्स, टॉपर रहे अपने बैच के, अपने स्कूल में जान मारी है, दे डिजर्व अ प्राइज, दे डिजर्व एन अमाउंट, डोंट दे? सो द आइडिया बीइंग से मैं डिस्कस करता हूं. सो जिन लोगों ने लास्ट ईयर AQ का टेस्ट क्लियर किया था, सही है ना, उनको तो 90% ऑफ मिल रहा है, ठीक है? सो उनके लिए इज जस्ट 2500 रुपीज कि वो जाके आराम से एक सेकंड में कोर्स में एनरोल करें. दिस इज dirt cheap. I don't even think this is dirt cheap. This is too सस्ता. But this is for everyone who cleared the AQ test last year. हम लोग आपके साथ एक गूगल फॉर्म शेयर करेंगे. Messages on WhatsApp, messages on social media. The form will be shared. Show us your transcript from last year कि देखो हमने हसनैन भाई AQ का टेस्ट क्लियर किया था last year, and you will get this private university course for just 2,500 rupees. So 90% off is something I'm super happy about. All of you who've cleared the AQ test once before, you need to get this ASAP. For students who have gotten FSC में 95+%, जिन्हें I think जो थीटा है, जो टॉप बच्चे हैं उनके पूरे बैच के, या फिर उन्हें AS में बायोकेम फिजिक्स में 3A मारे, उनको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी. सो उनको पूरा जो फॉर एग्जाम्पल हमारा कोर्स है वो मिलेगा 12,500 रुपए का. सही, दैट इज वेरी चीप ऑनेस्टली. मतलब फ्रॉम वेयर टू वेयर आप लोग को लाइक यू नो बहुत सस्ता मिल रहा है ऑनेस्टली. सो गो मेक श्योर यार, इससे सस्ता तो कोई भी नहीं दे रहा है. सो जस्ट मेक श्योर यू गो एंड परचेज इट राइट नाउ. जिन्हें 90% प्लस मारे हैं फॉर एग्जाम्पल, या 2A's मारे, या बायो में या केम में या फिजिक्स में, उनको 25% ऑफ. एंड जिन्हें 85% मारे या फिर सिर्फ एक ए लेकर आ पाए, उनको 50% स्कॉलरशिप. गाइस ट्रस्ट मी, 50,000 का जो कोर्स है, अगर आपको 2,500 या 12,500 में, इवन अगर 21,250 का मिल रहा है, दैट इज अ स्टील फॉर ऑल ऑफ यू जेन्युइनली. सो यार ऐसी प्राइस में कोई नहीं दे रहा है. फॉर 4 months आपको प्रॉपर मेंटोरशिप मिल रही है, आपको गाइडेंस लेक्चर्स मिल रहे हैं, आपको लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं, आपको होमवर्क मिल रहा है, आपको डैशबोर्ड मिल रहा है, आपको मुझसे सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिल रही हैं. स्टेज 2 में पूरी आपकी प्रिपरेशन होगी, इंटरव्यू प्रेप होगी, आपका पूरा स्टेज 2 फॉर्म बनाने में हेल्प करेंगे. एंड अगेन students who have gotten into AQ will be teaching those lectures. तो वो आपको जो tidbits और information देंगे ना, no one can ever match that. So अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, डू मेक श्योर टू मैसेज अस. हम लिंक हर जगह शेयर भी कर देंगे, हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, यूट्यूब के हम चैट बॉक्स में डाल देंगे. तो मेक श्योर जिन बच्चे ने स्कॉलरशिप का पूछा था, यू गाइज आस्क्ड, वी डिलीवर्ड. So make sure to sign up ASAP. जो आपने इतनी मेहनत की over the last 3-4 years in your metric, in your inter, in your FSC, in your A levels, in your O levels, उसका जरूर फायदा उठाएं. सही है? So this is a gift from Fahad and me for all of our users, ताकि आप सबका जिनका बहुत जुनून है, शौक है, वो लोग AQ afford कर सके. We can afford our private university course as well, and they can make sure they get into AQ. ठीक है? This is from us to all of you. ठीक है? Next, move on. So now question and answer session. So this is, अगर कोई भी सवाल बचा है, I'm gonna be seeing the YouTube chat and sharing everything over here. तो ताकि आपके जो भी सवाल है हम उनको जवाब दे दें. So it's 7:05. I will keep answering questions for the next 5 to 10 minutes. So whatever questions you guys have, please use the chat box on YouTube and send them over here. ठीक है? You can also, अगर कोई बाद में ये वीडियो देख रहा है, please make sure to subscribe to our YouTube channel, obviously, जिस तरह हर कोई कहते हैं, but बेल आइकन पे क्लिक करें. बट सबसे ज्यादा हमारा जो कमेंट सेक्शन है उसको यूज करें and ask your questions. We will answer all your questions over there as well. ठीक है?
इज FSC सेकेंड ईयर स्टूडेंट अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप थ्रू? यस, सो ये है हमारे जो, दिस इज फॉर द ईयर बिफोर, ठीक है, नॉट फॉर दैट, ठीक है ना। कोई भी अगर सवाल हो, कोई आपको समझ नहीं आई बात है, तो प्लीज 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 हमें मैसेज करें, हम आपको एग्जैक्ट जो रिक्वायरमेंट्स है बता देंगे ताकि आप अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकें, ठीक है। AQ में एडमिशन के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको A लेवल्स में सिर्फ BBB मारना होता है, 70% से ऊपर स्कोर करना होता है, उसके बाद यू आर क्लियर। द AQ टेस्ट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। अगर वो क्लियर नहीं किया तो इवन इफ यू हैव गॉटन 100% इन योर FSC और 4 स्टार्स, या आपने डिस्टिंक्शन मार ली, आपने टॉप इन द वर्ल्ड मार लिया इन योर A लेवल्स, आपका एडमिशन नहीं होगा। AQ टेस्ट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। आई हैड अ फ्रेंड इन डाउ, हमाद उनका नाम था, उसने आई थिंक बायो, केम, फिजिक्स में तीनों में टॉप इन द वर्ल्ड मारा था, बट उसका AQ टेस्ट क्लियर नहीं हुआ था, तो उसका एडमिशन कभी हो नहीं पाया। Keep asking your questions. I'm answering all the I'm answering all the questions. We have already joined academy with high fees. यार देखो, आप लोग की मर्जी है, मैं सजेस्ट ये करूंगा कि यार ये टाइम वापस नहीं आने वाला, सही है ना। अकेडमी ज्वाइन कर लिया आप लोग, 1 महीने में छोड़ दोगे, ये मौका वापस नहीं आएगा। ऑनेस्टली मैं बहुत बता रहा हूँ, मैंने भी अकेडमी ज्वाइन की थी, बिकॉज उस वक्त तो प्रीमेट था नहीं, बट मैं सबको ये बोलूंगा कि यार अभी इन्वेस्ट कर लो, हमने आपके लिए स्पेशली स्कॉलरशिप लगा दी है ताकि आप लोग अफोर्ड कर सको। इससे आगे हम कुछ कर नहीं सकते। वी ऑल्सो हैव टू पे द टीचर्स, द टेक, the server, the recorded lectures, the mentors, the homework के लिए सारा questions जो बन रहे हैं, so इससे आगे भी cannot genuinely afford, वरना फिर हम लोग नुकसान में चले जाएंगे honestly। तो ये बहुत जरूरी बात है। इसके साथ में किधर है नंबर, हम लोग हर जगह लगा रहे हैं। हमाद, आई विश हमने नंबर यहाँ डाल दिया होता, बट हम लोग चैट बॉक्स पे डाल रहे हैं, हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके साथ में MD कैड नम्स नहीं, अगर आप लोग ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी कर दिया है तो इब्तिदा के लिए नहीं करने की जरूरत है एसेंशियली, बट अगर आपको लगता है कि हम बहुत वीक हैं, वी नीड मोर हेल्प, हमें मेंटरशिप चाहिए, हमें गाइडेंस लेक्चर्स चाहिए, तो मेक श्योर कि आप वो भी साइन अप कर लो। इट्स वेरी चीपर कोर्स, तो आप आराम से उसको भी अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। yes, you have to go for the course. Would it be wise to repeat? Yes, I think AQ is worth it. I went to Dow as well. I do not regret my decision. I honestly feel कि 1 साल ज़ाया आपको लगता हो रहा होता है, बट 1 साल से ज़्यादा जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है ना AQ का, it's unmatched. I think it is wise. अगर आपका कीमो में भी हो गया हो या डाउ में भी हो गया हो, I think 1 साल वापस रीट्राई मारने में कोई नुकसान नहीं, कोई हर्ज नहीं है। आपका अगर हो जाता है एडमिशन, it's an experience of a lifetime that you will not get again ever. There's a difference in a graduate of AQ, in a graduate of chemo, in a graduate of Dow. So I think it's worth it, honestly. मैं तो इसे suggest करूँगा। You will crack AQ. Falak Sher Saab, I am praying for you that inshallah you will crack it. Recordings are not playing on Ibtida. You reach out to our course mentors, and अगर नहीं होता है तो you reach out to me on this number I've provided, and I'll make sure its recording are available. Right, guys? मैं बता रहा हूँ, this platform is made by students. कोई मसला हो, we will look after it. सही है ना, हमाद को reach out करें, अगर हमाद जवाब नहीं देता है, हमाद को गला मैं पकड़ूंगा। I assure you guys of that. सही है? नहीं, if you have a C in your A levels, you cannot apply. You have to have at least BBB. C वाला बच्चा apply नहीं कर सकता है। Sir, I've been in KIPS for the last 4 years. I've also joined the course. How can I manage? यार honestly हम यही discuss करते हैं ना guidance sessions. It's difficult, no doubt, but you need to realize कि यार आपके पास एक limited time है। ये 6 महीने ये वापस नहीं आएंगे। फिजिक्स वाले का अगर आप लोगों ने सुना, अलग पांडे, ही इज माय मेंटर, ही इज समवन आई रियली लुक फॉरवर्ड टू। वो यही बोलता है कि यार ये टाइम वापस नहीं आएगा। सुबह 6 बजे उठो, 6 से 7 बजे आप नाश्ता करो, नमाज पढ़ो, उसके बाद पढ़ने बैठ जाओ। अगर रात के 10 बजे उठते हो तो आपके पास मोर देन 12 आवर्स हैं, तो आराम से 12 घंटे में आपके AQ का पूरा जो कोर्स है, आप अपनी तैयारी, अपना सब कुछ कर सकते हो। So trust me, you have to manage your time well. आज से शुरू करोगे, 6 महीने की तैयारी शुरू करोगे, you will be in the best of spots. सही है। जिनको AQ अप्लाई करना है, आपने अगर इब्तिदा में कर लिया तो you have to apply for this course as well. This course is necessary for applying to AQ. अगर नहीं किया इसमें तो there's a very high chance आपका AQ में नहीं होगा। Can a kid with C? No, you. So Ziauddin में it's a loser. It's an easier admission process. आपका हो जाता है, but again every year the system changes. हम इसकी जो updates है वो डाल रहे होते हैं कि क्या requirements है. So make sure to follow us on our Instagram, on our social medias like YouTube, ताकि हम जो सारी update दे रहे हैं आपको पता हो। हमारा WhatsApp channel पे सब कुछ share हो रहा होता है, तो if you guys aren't part of the WhatsApp channel, please make sure you are part of the WhatsApp channel. If someone has already enrolled in the AQ session, so yes, I will let you guys get the scholarship. So reach out to Hamad and we will get the scholarship done for you. Chalo.
as a gift from my end. सही है ना, Valentine's Day भी गुजरा है, आप लोगों को एक gift देते हैं, सही है. I lose my motivation easy. This is why we are having the Sunday sessions, guys. This is where I will come. We will have AQ students come and talk about their motivation. I'm telling you, I wish I had my lab coat. नहीं, lab coat नहीं, stat है मेरे पास, को दिखाता हूँ, stat है मेरे पास. कभी कहीं गायब शायद ना हो गया हो, या वो नीचे रह गया होगा मेरे कमरे में. This is why I feel every day when I go to AQ, I feel powerful कि यार मेरे पास stat है, I wear it. Patients से Dr. Hasnain, family से thank you so much. तो वो feeling is something is unmatched for the last 5 years. तो अगर आपको feeling चाहिए तो ये 6 महीने में अपने आप को motivate करना पड़ेगा. Right. Musa कहे जा रहा, I want to contact you. I have sent my number, Musa. It's there in the chat box. Please use that number to reach out to me. सही है. अच्छा, इसके साथ में what is the merit to become one of those who study free? तो वो need based scholarship होती है. So अगर आप deserving हो तो आपको full scholarship मिल जाती है. अगर deserving for example नहीं हो but you have let's say 50% chance है, तो वो होता है after you get it. Don't think about that right now. You can't do anything about that right now. What you need to do is just to crack the AQ test, crack the AQ interview. Once you're selected, then you can actually move on and talk about the scholarship. Okay? ठीक है? Reach out to Hamad, How HQ. You can reach out to Hamad. Okay, guys, with that, I think I've answered all the questions. Most of the questions are being repeated. So, guys, please do listen to these this question and answer session again. Reach out to us on our WhatsApp. मैं आपके chat box में डाल दूंगा. Again, एक दफा last में डाल रहा हूँ number. अभी मैंने copy paste कर दिया है. So reach out to this number. इसके साथ में you can reach out to our social media. You can comment on this video. You can, for example, reach out to us on Instagram, on YouTube, on even WhatsApp numbers. Even our WhatsApp link is available in the description. हमारा जो course की subscription है, it is available on the chat box. हमारे प्रीमेट पे जाके आप कोर्सेज के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे कोर्स अवेलेबल भी है. कोई भी सवाल हो, reach out to my number जो मैंने दिया हुआ है. We will answer all your questions and make sure to enroll ASAP ताकि 17th को क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आप लोग इनरोल हो जाओ. स्कॉलरशिप्स का एक दफा हम दिखा दो आप. इस स्कॉलरशिप की ये रिक्वायरमेंट है. सेकंड है, रीच आउट टू अस ऑन आवर सोशल मीडिया, जैसे गूगल फॉर्म एज वेल. आप वो फिल करोगे, आपको रीच आउट करेंगे, आपका हम लोग स्कॉलरशिप एसएप एक्टिवेट कर देंगे. ठीक है. सो थैंक यू एवरीवन. आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड द सेशन. थैंक यू Hamad for showing the dashboard as well. I look forward to seeing all of you becoming a part of this AQ course and getting into AQ, inshallah. I look forward to seeing you all on campus in November 2025, inshallah. Okay? So good luck, guys. You got this. Praying for all of you. Make sure out of syllabus questions जरूर करना, because make sure कि आप प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए रो नहीं रहो with your parents. You are the one who gets into AQ. You are the one who gets into Dow, Kimu, Allama Iqbal, King Edward, everywhere, right? You guys deserve it. You guys are the super smart kids of Pakistan. Okay? Thank you so much. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz, everyone.